I hope you all are ready. Tara ma'am. Yes. Yes. Have you got the notice that when your listening test is going to be? Have you seen that in WhatsApp? Did you see that? Yes, ma'am. When is Yes, ma'am. that? Yes, ma'am. When is that? Can anyone tell me when is that? 20 November. Yes, correct. Yesterday. No, yesterday you got the notice, but when is the exam? It is on 20th November. So listening skill is going to be easy because there is nothing to study. I will tell you one story, and based on that you are going to, what you are going to do? Based on that you are going to listen and you are going to answer. Okay? You are going to answer. Yes. Google form is going to be, and Google form will have questions, and those questions you are going to answer. Part of the story, like before I have given you practice, part of the story I will read, then you will answer some. Next part I will read, you will answer the rest. Then after that, we will answer the rest, and when you will finish, you will submit it. That's it. Nothing to prepare, and it will be on the 20th. Okay? Before that, we are going to study, we are going to finish this reading test. Okay, now let me see कौन बचा है. Alankrita, yes, start. You read The Little Bully. Yes, ma'am. मैम जहाँ पे कल सलोनी ने छोड़ा था. No, from starting. The Little Bully. ओके मैम. The little bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? This is the मैम. story of how Hurry, a little boy, troubles other children. Once upon a time, not so very long, there was a boy called Hurry. Also, he wasn't very big. He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but it was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went Okay, for a picnic. thank you. Thank you. Alankrita, थोड़ा धीरे पढ़ना. आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा धीरे. ओके. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट एक मिनट. ये आदित्य आपके क्लास में आता नहीं है ना? आदित्य कुमार जाटव. Yes, ma'am. Ansh, are you there? Yes, ma'am. Ansh, are you there? Yes, please Yes, read. ma'am. उसके बाद से पढ़ो. Yes, ma'am. They did not like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. One that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train. Excitement. Excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Harry because he always pinched him. When they arrived at the seaside, out jumped all the all the children with a shout of joy. Down to the sands they reached hand in hand, but nobody took Harry's Raced. hand. Nobody. Raced. Raced. Harry was angry.
He went to a अंश sandy. आपकी आवाज जा रही है, माइक की तरफ मुंह करके बोलो। मैम अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। Okay, ma'am. Harry was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat थैंक यू down थैंक by यू। himself. ओके हो गया। Thank you, ma'am. अंश दैट्स एनफ, यू रेड वेरी वेल, थैंक यू। अरण्या, Yes, ma'am. आज वीडियो ऑफ नहीं करना है, ऑन रखो। हाँ पढ़ो, उसके बाद से हरी वॉज वेरी एंग्री, हरी वॉज एंग्री वहां से। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were two hard boiled eggs, six jam sandwich, three pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't. पढ़ो। What happened, Aranya? Himself. He would not Aranya, पढ़ो। offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Scared, Whatever scared, scared. stared stared in fright. Whatever do you think saw? Harry saw a monster crab walking Thank you, sideways Aranya. out of the. Aranya, Yes, ma'am. Aranya, thank you. Okay, ma'am. That's enough. Thank you. Um, Dipesh, are you there, Dipesh? Dipesh, Tony, he doesn't want to give the exam, it seems. Devansh, Devansh is not there. Oh, okay. Disha, Yes, ma'am. Disha, Yes, ma'am. I am here. yes, please read. Okay. His eyes were Please read. Hari saw a monster crab. वहाँ से. okay. Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the end of short stalks, and he looked most queer. He held out his front claw to Harry. Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. Ah, where is my good cousin? Said the crab pleasantly. And to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. Then he stared at the pool. Okay, thank you, Disha. Thank you, Disha. Welcome, ma'am.
हाँ, एक चीज़ आपके मैं बोलना चाहूँगी, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आपके ना पंक्चुएशन सही-सही नहीं पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे पंक्चुएशन है वहीं पर आपको पॉज़ करना है। आप क्या है, आप कभी-कभी बहुत रेयर, आप कभी-कभी सेंटेंस के बीच में रुक रहे हो, जहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है वहाँ पर। तो उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे पंक्चुएशन नहीं है वहाँ पे वो, जहाँ पे कॉमा है 1 सेकंड लेंगे, जहाँ पे फुल स्टॉप है 2 सेकंड लेंगे। ओके? वहीं पर रुकना है, तो फंक्शन के लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज रीडिंग इज फाइन, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। करना, Yes, ma'am. यस प्लीज रीड आफ्टर दैट। Danny started acting in surprise. Or outcome: sandy colored shrimp and prawns, more crabs, and a large कनक, lobster. आपका And वीडियो ऑफ है, तो ऑन करना है, स्विच ऑफ ma'am, कर मेरा दीजिए। कैमरा on है। Ma'am, her video is मुझे नहीं on. दिख रहा है। Ma'am, her Ma'am, video is on. her video is on. Yes, ma'am, her video is on. हाँ, नाउ आई, ओके फाइन, ओके रीड। Lobsters, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. Don't you like it? Said all the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun. Hurry leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and then the crab and lobster saw it. They ran to it and began to feed angrily. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life. Tears streaming down his che- cheek. cheek. They only did do me that I keep doing to the other children, he thought. But how it hurts, and how I hate those crabs and lobsters. I suppose the lobsters' children had me well. I jolly well send it pinch or prick anymore. ओके, थैंक यू कनक। Okay, Karbi, from the next lesson. Om Shri Sai Ram. My name is Kabi Gugoi. Today I am going to read the Unit 6, The Talkative Barber. Long, long ago, a sultan, whose name was Shahryar, ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated Asian, Persian, and Arabic folk stories. This is the one of the stories from the Arabian Nights. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer. For everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Bugbone, Bugburia, Bugbug, Alkuz, Alnashi, or Shakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and other has a defect in his speech. And they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and Okay, very thank good you, bird. Karbi. Thank you. Thank you, Karbi. Okay, ma'am. Well read. Very good. Okay, Kartik. Kartik Srivastav. Yes, ma'am.
Please read Gave him after that. three pieces of gold. The Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved, my Kragar. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quiet your house till I have lived. Quit. And began That is narrating quit. another Quit your house. He then began narrating another story, which lasted half an hour. Still making speeches and speaking quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. When he saw that the Sultan was Okay, really thank angry, you. Thank you. Karthik, thank you. Okay, Laksh. Laksh Yes, ma'am. Srivastava. Please read. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to save you." Saying this, he was washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the ra- ra- razor. Razor. When he Razor. razor, when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on saving me. Hastily. No more." The Sultan. Be आपको सुनाई patient, दे रहा है? मैं जो said the बोल रही हूँ barber. corrections. Can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me? What corrections I am saying? Hastily. That word is hastily. Okay. The Okay. Thank you. Thank you. Your reading has okay, to ma'am. improve. Okay. प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारा गड़बड़ है और आप लोग के भी पढ़ रहे हो, सो रीडिंग हैज टू इम्प्रूव। आप जो बाहर टाइम वेस्ट करते हो उसका थोड़ा सा टाइम रीडिंग के पीछे दो। आई फील यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग के टेस्ट लूँ मुझे ऐसे रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, रिमेंबर दैट, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक से रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। ओके, खुशाल भारद्वाज। खुशाल, Yes, ma'am. खुशाल भारद्वाज, where are you? Yes, ma'am. Switch on your video, switch on your camera and start reading. Yes, ma'am. Page 102. Ma'am, page number. 102. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to save you." Saying this, he showed Begin to say. the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily
hastily in the hastily. matter. Go on saving me. Speak no more, ordered the Sultan. We pen- Okay, thank you. Kushal, thank you. Okay, Kushal Kumar. Yes. Mradul, read. Okay, ma'am. We claim my Be patient वहाँ से. ma'am. Be patient. Say Be patient वहाँ से. be patient. Said हाँ. said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this master of great importance is all about, and then I will give you many options on it. Finish shaving. My opinion on it. My opinion on it. Okay, ma'am. Finish shaving at once. The Sultan exclaimed, but in instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patient is exo- ex- exhausted. मैं ये क्या है patient इसके बाद Exhausted. 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 The Sultan cried, "Reclaim my master, and you shall Be calm. Be calm. be calm, बोलो. be calm, Be calm. be calm, बेटा L साइलेंट है. L का साउंड नहीं है. Be calm. be calm, be calm. Become my master, and you shall be shaved in a moment," said the barber, and saying this, he continued saving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. If you could Okay, inform, thank you. Madhur, thank you. Next, Madhur is over. Pranav. Pranav, Yes, ma'am. please read. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. The Sultan was completely fed up by now Fed and up. decided, Fed up. fed up by, by now and decided to satisfy, Satisfy. satisfy, Satisfy. satisfy satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. When the barber Thank you. heard, Okay, Pranav. Thank you. Okay. मैम Yes. मैम वो मेरा हो नहीं पाया था उसका जब मैं थोड़ा सा वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो मेरा हो गया क्या अभी देवांश हाँ, आपका चांस तो चला गया. ओके, अभी आप वीडियो ऑन करके पढ़ सकते हो. मैम कहाँ से पढ़ना है Yes, I will tell you. Page number 102. हाँ यस मैम पर प्रणव ने कहाँ से छोड़ा लास्ट में एकदम पेज के लास्ट में व्हेन द बार्बर हर्ड वहां से Yes, ma'am. पढ़ो आप. When the barber heard the Sultan Mention. mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invite 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite uh,
मैम ये क्या लिखा है? Forgotten. Forgotten it and have to made any preparation Hmm. Preparations for them. for them. The Sultan, who was at the mercy of the Mercy. Mercy. mercy of the barber, was ready to do anything to be read for him. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. Please Okay, show thank me. you, Devansh. Thank you. Yes, ma'am. देवांश पॉज में प्रॉब्लम है एक एक Yes, कुछ ma'am. कुछ आपके वर्ड्स में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है और पॉजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सेम मैंने Yes, दिशा ma'am. को भी बताया था पॉजिंग में प्रॉब्लम है आप फुल स्टॉप देख के भी नहीं रुक रहे हो कंटिन्यू 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 जब तक आपका दम है आप पढ़ते जा रहे हो दैट इज नॉट इट Yes, बेटा थोड़ा सा ना ma'am. आपको फुल स्टॉप पे थोड़ा सा Ma'am. पॉज करना होता है जब भी फुल Yes, स्टॉप देखो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ उसके बाद पढ़ो ओके ma'am. और कॉमा में Yes, ma'am. हाफ अ सेकंड के लिए थोड़ा सा पॉज करना है फुल स्टॉप में थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए पॉज करना है Yes, ma'am. ओके यस Ma'am. मृदुल आर यू सेइंग समथिंग यस मैम मैंने पॉज किया था फुल स्टॉप के बाद. वो मैं आपको क्यों बताऊं मैंने आपको कुछ बोला है इस बारे में दैट इज अप टू मी ना ओके राजकुमार ओझा इज देयर वो कभी नहीं आता है ना क्लास में ओके सानवी आर यू देयर सानवी Yes, ma'am. यस प्लीज रीड Please show me the food that I may judge if it is in upon my 5 friends. I have enough food for you. food yes The Sultan exclaimed, but exclaim बेटा वो exclaimed, exclaim but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan is displeasure, saying his head was half shaved, ordered that the fruit should all be brought in. ओके थैंक यू सानवी यस मुझे अच्छा लगा आप जैसे रेडी थे रीडिंग के लिए वेरी नाइस और थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपको चाहिए कभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है वो सही हो जाएगा ओके शाश्वत Yes, ma'am. यस प्लीज रीड ये शुरू हो अब नेक्स्ट लेसन आप पढ़ना है इसके बाद Okay, ma'am. The Gulliver's Travel. When a person tells the story of his life is known his own word is called as autobiography. Gulliver's a sailor was once scout in the land of giants. This is Caught. how he caught. This is how he describes his experience. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water. If any could be found, when we came to land, he saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore.
The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, turned backly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side, and the corn rising up to 40 feet. That is barley. Barley on either side, and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to another. It was. Okay, thank you, Shashwat. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Sabrina, please read from the next. Sabrina, are you there? I think she was here. Left only? Yes, ma'am. Okay. Sabrina is left. Number Next. Aditri, are you there? Yes, ma'am. Aditri? Yes, ma'am. Yes. Switch on your video and start reading Okay, page ma'am. 117. Okay, ma'am. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped weeping, picked me up between his thumb and Okay, forefinger. thank you. Okay. Pick me up. Okay, complete that sentence. Sorry. Between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. Okay, thank you. Thank you. Yes, well read. Ayat is not there. I think she does not come for class. Ma'am, she seldomly comes. Seldom comes. भी नहीं होगा. Okay. Good word to use. Adrita, can you continue from the next? Okay, ma'am. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. Adrita, just a minute. आपका कैमरा का फोकस थोड़ा नीचे हो सकता है मुझे सिर्फ आपका सिर दिख रहा है आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मैम एक्चुअली मेरा ना कैमरा अटैच्ड है कंप्यूटर से क्योंकि अटैच्ड है वेब कैमरा हाँ नहीं कैमरा है आप पूरा पकड़ पकड़ के उसका एंगल भी नीचे कर सकते हो मैम सही है हाँ लेकिन आप नीचे करके सिर्फ नीचे करके पढ़ते हो ना सिर्फ आपका सिर दिखता है चेहरा नहीं दिखता है कैन यू जस्ट होल्ड अप योर बुक एंड रीड ओके मैम यस दिस हाँ परफेक्ट He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backwards and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ears very close to me but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table.
which was 30 feet high from the floor. Dinner was brought. Okay, thank you. Aditya, thank you. Well read, very well read. Thank you, ma'am. Thank you. Aniket, Yes, ma'am. please read from after that. Dinner was Dinner. हाँ. dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in a diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise placed it noise हाँ. Noise behind me. behind me. It was the purring of a cat that कर was दिया. 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of बेटा a lady. son नहीं, son. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly. Thank you, Aniket. Thank you, Aniket. Oh, thank you. Okay. Um, Anuj, can you read, please? Yes, ma'am. I started. Is your camera on? Camera on? Yes. Thank you. Please read. Would have her uproar under me later. She put me on her bed and covered me with a set of my home, my and my child. Hmm? Are you done? Have you finished? Yes, ma'am. ओके आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे आज का टाइम ख़त्म क्लास का एंड वी विल लिसन अभी भागना नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रही हूँ ओके आपकी जो नेक्स्ट अभी तो दिवाली की छुट्टी है स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 16 on the 17th we are reopening that is a Tuesday on the next Wednesday that is 18 we will continue जिनका नहीं हुआ उस दिन उनका होगा रीडिंग एंड फॉर द रेस्ट रीडिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है फॉर द रेस्ट ऑफ यू वी विल स्टार्ट द पोम रेसिटेशन स्पीकिंग स्किल का टू पार्ट्स है देर आर टू पार्ट्स टू इट देर आर टू पार्ट्स टू इट वन इज द पोम रेसिटेशन यू विल गेट सम मार्क्स एंड द रेस्ट इज द स्पीकिंग स्किल टेस्ट ऑलरेडी वी हैव डन द प्रैक्टिस फोटोज दिखा के या ऑब्जेक्ट दिखा के मैं पूछूंगी उसके बारे में एंड यू हैव टू टेल मी इन इंग्लिश टू सेंटेंसेज अबाउट इट दैट इज द सेकंड पार्ट any poem or a particular poem? I will give you not any poem. I will give you a choice between few, 3 or 4 poems. में से I will give you the choice, and from there any one you have to tell me with proper expression. आप खड़े होके stand up करके हाथ पैर हिला के भी बोल सकते हो. You can use props also जो आपके पास easy available props हैं. ऐसा नहीं कि prop ढूंढने में गुना जाऊं और सबको बोलती फिरूं कि मैम ने बोला है. I don't require that. Okay. मुझे ट्रबल में And water prop. Water prop.
Props means any property that you want to show. Suppose you are telling a poem about a pen. You are showing this pen. Suppose Okay. you are telling a poem about a paper and you are showing me this paper. That is called a prop. Okay, ma'am. Suitable property used what you are saying according to that. That is the Okay, prop. ma'am. Okay. So I will give you Ma'am, the choice. I will listen. I will put in post in the WhatsApp कि कौन कौन से पोम्स हैं तो 18 को हम जब रीओपन करेंगे 17 को रीओपन करेंगे 18 को आपकी रीडिंग हो जाएगी उसके बाद से ही हम शुरू कर देंगे एक एक करके उस दिन कंप्लीट शायद नहीं होगा बट वी विल कंटिन्यू 20th को ऑफ कोर्स आपका लिसनिंग का टेस्ट होगा और लिसनिंग के टेस्ट के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचा रहेगा उसमें भी हम पोम का ही करेंगे सो देर इज नो रिलीफ फॉर यू ओके कंटिन्यू टेस्ट होते रहेंगे Okay, so we are going to squeeze this poem recitation into between because this will not take much time. So we have to squeeze in between this. मैम फिर तो स्पीकिंग उनका स्किल को टेस्ट भी हम होगा। थोड़ा सा और टाइम देंगे हाँ उनका सॉरी टेस्ट होगा। हाँ बेटा आई एम टेलिंग इन हिंदी आपको अभी हिंदी भी समझ नहीं आती है हमारी लिसनिंग स्किल की टेस्ट होगी हमारी स्पीकिंग स्किल की टेस्ट होगी लिसनिंग का ऑलरेडी आपको मिल चुका है 20th को होगा स्पीकिंग स्किल का पोएम रेसिटेशन होगा जो आपको कविता बोलनी है इंग्लिश वाली 3-4 कविता मैं चॉइस दे दूंगी व्हाट्सएप देख लेना वहां से कोई भी एक आपको रिसाइट करनी पड़ेगी ओके जब मैम। 18 में हमारा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम शुरू करेंगे and we will continue and we will finish it off 20 पर भी शायद थोड़ा सा टाइम बचेगा वहां पर हम फिनिश कर लेंगे उसको ओके and just to wish you all a very happy and safe Diwali to all of you तो आप थोड़े से एक लाइन में मुझे कोई बताएगा कि दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली मैम मैं मैम बताऊँ मैम मैं हिंदी में बताऊँ तांत्रिक बात मैम कैन आई 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 अलग बेटा बोलो मैम इन हिंदी नो दिस इज इंग्लिश क्लास मैम कैन आई मैम can I say हाँ मैम can I tell मैम कैन आई Okay, Can I? so tell me. ओके मैम। can I मैम प्रांजल भारत एक मिनट Lord Ram come back to Ayodhya after 14 years. Okay, that is one part of it. Tanjil. मैम please can I say Wait. Next you. Ma'am, can I say? Di- Diwali is our I think Diwali is our national festival because in this this is very big festival because दिवाली all पर रचना मत बोलो अभी आई एम आस्किंग वन लाइन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ma'am please can I जस्ट अ मिनट ओके आदित्य टेल मी Ma'am, we celebrate Diwali because Ramji, after killing Ravan, came back to Ayodhya, and when he was coming, he needed lights. He needed light to for guiding his way back. So that's why we light lamps and all that things to guide. Okay, that's one part of it. Yes, Pihu. Because Ramji can Ravan kill for Lanka and come to Ayodhya, and people can People lights on. welcome People them. welcome with diya for Ramji and Sita ji. Okay, thank Ma'am, you. I know it. Let me tell you. Okay. Diwali is celebrated in all 5 days. Okay. Not only one day. Diwali. Ma'am, in दिवाली का क्या significance, होगा? ma'am, in significance over of good over evil. हाँ, that is After true. Krishna, But you will we be are surprised to know that we have 4 ages, right? Satya Yug,
त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। ओके, 4 युग, 4 युग है हमारे। तो चारों युग के फेस्टिवल्स इसमें कंबाइंड हैं, विच आर सेपरेटेड बाई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में भी, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं सारे एक साथ ये 4-5 दिनों में। विल बी सरप्राइज टू नो। दिवाली के दिन यस, राम जी आए थे अयोध्या में एंड पीपल वेलकम देम बैक आफ्टर किलिंग रावण एंड दे केम बैक एंड यस दे वेलकम हिम बैक दैट डे। उस दिन काली पूजा भी होती है, कुछ कुछ प्रदेशों में लक्ष्मी पूजा भी होती है। एंड ये धनतेरस क्यों होता है? उसके पहले धनतेरस होता है, दैट इज नॉट फॉर धन, दैट इज नॉट फॉर वेल्थ और मनी। व्हाट इज दैट फॉर? धन्वंतरी। हैव यू हर्ड ऑफ द डिवाइन डॉक्टर ऑफ हिंदू माइथोलॉजी? धन्वंतरी आपने सुना नहीं? No, ma'am. दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। उनके पास वो Ma'am, we देवता, heard. ओके Ma'am, देवता। Diwali is celebrated 20 days after Dashera. Yes, that is true. But why? What are the significance of the festival? We should know. We are Ma'am, growing good up. over evil. Ma'am, We good are over evil. Ma'am, good over evil. गुड ओवर इवल बोलने से नहीं होगा। वी हैव टू नो द डिटेल्स। धनतेरस क्यों है? बिकॉज द डिवाइन डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर है धनवंतरी। ओके, देवताओं के डॉक्टर है। वहां पे कोई बीमार हो जाते हैं तो इलाज करते हैं किससे? विथ हर्ब्स, आयुर्वेदा से। तो वो क्या कहते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। ओके, हमारी जो फिटनेस है हमारी, वो सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। वो धन्वंतरी के रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में धनतेरस होता है। ओके, वी शुड बी इन गुड हेल्थ। हम साफ सफाई करते हैं ना, साफ सफाई करते हैं तो क्या बनेंगे? फिट बनेंगे। वी विल बी इम्यून टुवर्ड्स डिजीजेस। ऑल्सो फॉर कोरोना वी विल बी स्ट्रॉन्गर। सो हेल्थ इज वेल्थ। सो उसके लिए, उस धन के लिए हम धनतेरस करते हैं। ये सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं। ओके, दिस इज सिंबॉलिकल। हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज द मेन थिंग, दैट्स वाई धनतेरस। भाई दूज Ma'am, क्यों होता है? भाई दूज क्यों होता है? क्योंकि पहली बार यमुना ने, यमुना एंड यम आर, वो जुड़वा भाई बहन है, आपको शायद पता नहीं। एंड हुज चाइल्ड आर दे, हुज चिल्ड्रन आर दे? सूर्य देवता की संतान है वो, सूर्यदेव के जुड़वा बच्चे हैं। ओके, यम एंड यमुना, यमुना इज दिस रिवर यमुना। ओके, तो यमुना ने क्या कहा था कि मुझे तो कोई भाई को दिखने नहीं मिलता है, ही सो बिजी द होल ईयर राउंड, सो व्हाट कैन माई ब्रदर कम टू मी वन डे? एक दिन क्या आप मेरे लिए दे सकते हो? देन यम प्रॉमिस्ड हिम दैट ओके, आफ्टर द दिवाली डे आई विल गो टू यू। वो आते हैं और यमुना क्या करती है? उसको भाई दूज का जो टीका होता है वो लगाती है। टीके से क्या होता है? दैट इज थॉट टू बी फॉर द लॉन्ग लाइफ of her brother, because she wished to God that he would always be fit and fine and he would live forever. So symbolic is Ma'am, that, can so I? हर उस दिन में हर बहन अपने भाई को भाई दूज का वो टीका लगाती है ताकि उसका भाई लॉन्ग लाइफ रहे और फिट एंड फाइन रहे। सो दैट इज सिंबॉलिक। ओके, और काली चौदस को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज अगेन गोइंग बैक टू द द्वापर युग। दूसरे युग में चले गए। क्यों? नरकासुर को मारा था कृष्ण भगवान ने उस दिन। दैट इज ऑल्सो विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इवल। नरकासुर कौन थे? एक्चुअली ही वॉज द सन ऑफ कृष्णा, कृष्ण के अपने बेटे थे, लेकिन ही टर्न्ड इनटू एन असुर बिकॉज ही डिड सो मच बैड थिंग्स। उस नरकासुर को भी मार दिया था, विष्णु के पुत्र थे वो, और विष्णु एंड कृष्णा आर द सेम, यू नो, इज द इनकारनेशन, विष्णु के कृष्णा है, तो एक्चुअली इज द सन। लेकिन उन्होंने उनको उसको भी नहीं छोड़ा था, मार दिया था, क्योंकि वो ईवल बन गए थे, बुरे बन गए थे। एंड दैट इज द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर ईवल। नरकासुर को मारा था काली चौदस के दिन, दैट इज द डे बिफोर द दिवाली। So do you understand? So many things are combined, so many mythologies are combined into celebrating Diwali, not just the Ram one. राम का त्रेता युग में, उसके बाद आता है द्वापर युग में कृष्ण ने, जो नरकासुर वाला,
फिर ये सत्य युग में चले जाता है, भाई दूज वाला, यम और यमुना का स्टोरी। ओके, सो ऑल दीज 4 युग्स आर कंबाइंड टुगेदर टू सेलिब्रेट द दिवाली। मैम इसमें कौन सी कहानी जुड़ी है, किस फेस्टिवल में और क्यों किया जाता है? ओके, मैम जैनिज्म सेलिब्रेट दिवाली अनदर रीजन। यस, टेल मी। मैम कैन आई टेल इन हिंदी? ओके, मैम हमारे महावीर भगवान जो है उनको सुबह सुबह मोक्ष प्राप्त हुआ था, और जो गौतम गर्दर हैं उनको शाम के टाइम पे केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यस, दैट इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंस। तो ये सब को लेके हमने इंडिया में क्या किया, सबको रिस्पेक्ट दिया और सबके ये जो भावनाएं हैं रिलीजियस, इन सबको इम्पोर्टेंस देके हमने कंबाइन करके एक दिवाली का 5-day बोनांजा फेस्टिवल बना दिया। ओके, मैम वी आर रिस्पेक्टिंग ऑल। मैम हम लोग होली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि होली का प्रभक्ति होली सुनो, होली के टाइम पे होली का हम देखेंगे। ओके, सो ओके, टुडे वी विल एंड द क्लास, नाइस डिस्कशन। होली के टाइम पे हम होली का सिग्निफिकेंस देखेंगे, नॉट नाउ। मैम हैप्पी दिवाली मैम इन एडवांस। ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली मैम। Diwali, ma'am, and happy Diwali to all. Advance and all of you. हैप्पी दिवाली मैम। Thank you, ma'am.